Well, good morning, my dear students. So, we are going through our chapter number 16 on the topic light. Okay? So far, in 2 sessions, we have tried to cover light, reflection of light, laws of reflection, image formation by the plane mirror, and what are their characteristics. Then we were last at what? Whether a reflected light can be reflected again. And the most important thing was, though we have repeated what we have studied in 6th and 7th, but we have tried to understand the laws of reflection, and the reflected light can be reflected again, and the formation of image in contrast with what? Laws of reflection. कहने का मतलब क्या है? पहले तो हमने एक तरह से उनको समझा, ठीक है भाई, प्लेन मिरर reflects the light, bouncing back of light is known as reflection, sending back of the light by the object is known as reflection. ये हमने पढ़ा 6th में. How it happens that we have tried to understand it, what? This class. Okay, and we were ending with what? Reflected light can be reflected again. Yes. And that is the working of the periscope. How the periscope works. ठीक है? तो उसमें क्या है? और ये जो working of the periscope है, we have tried to understand in contrast with the laws of reflection. When the incident ray is making a particular angle, incident angle with the mirror, it will be reflected at the same angle. Reflected angle will also be the same. And mainly क्या है बच्चों? The periscope works on the basis that when the two plane mirrors are fixed in the periscope parallel to each other, they reflect the reflected light. Suppose now, and we have just tried to touch this point, whether on the basis of this that reflected light can be reflected again, multiple images can be formed by a mirror, multiple images. और जो पेरिस्कोप के बच्चों uses थे, that we have not touched it. Uses बच्चों क्या? It is being used by the army people when they are in the front and the border areas. They are putting up themselves in the trenches. वो जो खड्डे बना लेते हैं उसको हम खाई बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसे आप हिंदी में? I think there is some particular word in your book. Let me see that. What is that? In Hindi, I forget, बच्चों. In English, it is known as trench. Yes, bunker. Yes, bunker भी English word है. Bunkers जो बोलते हैं जिसको हम, ट्रेंच, बंकर्स, जो अपने आप को छुपा रखा है उन्होंने नीचे वो जमीन के अंदर, एंड दे कैन सी अपवर्ड्स, जो ऊपर क्या मूवमेंट्स है एनिमी की, दे कैन सी विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप. एंड नेवी पीपल, दे आर यूजिंग दिस पेरिस्कोप इन देयर व्हेन दे आर अंडरनीथ द वाटर, पानी के नीचे गहराई में, सबमरीन में है, दे कैन सी द मूवमेंट ऑफ द शिप ऑफ द एनिमीज ऑन द सी, इन द सी, and they can attack them. Okay, so yes, one more use, हालांकि वो पेरिस्कोप का नहीं है, it is not a periscope. In a month or so, you go to the barber for your haircut. अब आप फ्रंट पे बैठे हो, you can see your face. वो जो आपके आगे वाले उसने बाल काटे हैं, साइड वाले बाल काटे हैं, यू कैन सी उसने कैसे काटे हैं, बट यू कैन नॉट सी द बैक. व्हाट दैट बार्बर इज डूइंग, वो क्या करता है बच्चों? एक प्लेन मिरर आपकी कटिंग करने के बाद, आफ्टर डूइंग योर हेयर कट, ही इज ब्रिंगिंग वन प्लेन मिरर आपके गर्दन के पीछे लेके आता है, एंड द इमेज फॉर्म्ड ऑफ दैट हेयर कट विच ही हैज डन of your neck and all the neck area, from that mirror it is reflecting on the mirror in front of you, and you can see how he has cut, whether you want any change.
So that is what? Reflected light can be reflected again. Now, okay. On the basis of this, if we say reflected light, that means image formed in a plane mirror can act as an object for the second mirror. अब देखा ना आपने बार्बर के पास आप गए हो, व्हाट ही इज ब्रिंगिंग दैट बार्बर, वो नाई क्या करता है, आपकी गर्दन के पीछे एक प्लेन मिरर लेके जाता है और उसकी आपकी जो कटिंग हुई है वो आपको फ्रंट वाले मिरर में नजर आ रही है. जो बार्बर ने पीछे प्लेन मिरर किया है, व्हाट इज दैट, ये गर्दन आपकी क्या है, जो पीछे वाला एरिया है, दैट इज द ऑब्जेक्ट फॉर दैट मिरर. इट इज मेकिंग ए इमेज, virtual image in the plane mirror which the barber is bringing behind your neck. That image now acts as an object for the front mirror, and you see how the barber has done your haircut. Okay, so multiple images can like this. That means the image formed in a plane mirror can work an object for the other mirror. Yes, and this way multiple formation of images are there. वो कैसे होता है बच्चों? Suppose when two plane mirrors are kept inclined at an angle. कहने का मतलब क्या है? We are having two plane mirrors like this. I am having two strips of plane mirrors in my hands. If they are kept at an angle can be 45 degree, it can be 60, it can be 90, can be 120 also. Like this, you go on increasing the space in between. The space is lesser, angle is less. You go on increasing the space, now it is 180 degree. So, in case when two plane mirrors are kept inclined at an angle, they can form multiple images of the object. In दो plane mirror के अंदर which have been inclined at an angle, if you place an object, an article, it will make more than one images, which is known as multiple images. Okay, so what will be the exact number? There is a system. Set formula is there. How many images of that object will be made if two plane mirrors are kept inclined at an angle? That is 360 divided by x. Here what is x? X is the angle between the two plane mirrors. Suppose we are having the angle as 60. What will be the number of images formed? 60 divided by -1 is equal to 60. 6 minus 1, 5. Suppose, okay, 360, angle is 30. What will be this? 12 minus 1, 11, and angle is 90. 4 minus 1, 3. कहने का मतलब क्या है? If these two plane mirrors are placed like this at right angles, 90 degree, the number of images formed will be 3. अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? When the angle is 30, number of images formed is 11. When the angle is 60, number of images formed is 5. And if we make it 45, it is 7. 30, 11, 45, 7, 65, 93. And if we make it 180, okay, 360 divided by 180 minus 1 is equal to 1. कहने का मतलब क्या है? If you are, ये दो प्लेन मिरर हैं, कोई एंगल ही नहीं है, एंगल ये लो 180,
180 एंगल प्लेन, कितनी इमेज बनेगी? अब तो एक तरह से ये दो नहीं है, एक प्लेन मिरर बन गया भाई, वन इमेज, वन। कहने का मतलब क्या है बच्चों? इफ वी आर डिक्रीजिंग द एंगल, नंबर ऑफ decreasing the angle, increasing, yes, number of images increase, and if we decrease the angle, यानी एंगल बड़ा होता जा रहा है, नंबर ऑफ इमेजेस कम होती जा रही है। डिक्रीज द एंगल मतलब एंगल को हम डिक्रीज तो छोटा होता है, इंक्रीज द एंगल, नंबर ऑफ इमेजेस आर बिकमिंग लेसर लेसर एंड लेसर। नाउ ये तो हो गया, चलो भाई क्या कहते हैं अपना 30, 45, 60. Now I am taking the example. One more example I am taking. Yes. If the angle is 0, is what? इनफाइनाइट, इंफिनिटी हम बोलते हैं। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं बच्चों, द आंसर इज इनफाइनाइट, हम काउंट नहीं कर सकते। लार्ज सच के लार्ज नंबर से हम क्या कहते हैं? इट इज इनफिनिटी। कहने का मतलब क्या है? वी आर हैविंग टू प्लेन मिरर्स, 90 degree, 60, 45, 30, no, 180, only one image, 360 divided by 180, minus 1. अब क्या बच्चों? इनमें कोई एंगल ही नहीं है, they are parallel to each other, कोई एंगल नहीं है, एंगल इज 0 in between these two mirrors. If we place any object in between, इन दोनों प्लेन मिरर्स के विच आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ वी आर प्लेसिंग एनी ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी इमेजेस इट विल फॉर्म? एंगल इज 0, इनफाइनाइट नंबर्स, इंफिनिटी, आप काउंट नहीं कर सकते। बच्चों कई बार जब आप छोटे होते होंगे, छोटे थे, हो सकता है आप मेले में गए हो किसी, वहां पे ऐसे ही मिरर्स के साथ ये चीजें दिखाई जाती हैं। एंड इफ यू हैपन टू विजिट हरिद्वार, इफ यू हैपन टू विजिट हरिद्वार, देयर इज वन पावन धाम, और पावन धाम इज आल्सो इट इज नोन एज पावन धाम। From Har Ki Pauri, if you go towards Rishikesh side, Bhimgoda side, there is one Pavan Dham or Pavan Dham is also, ये मोगा वालों का है। They are having these sort of arrangements of mirrors and all that. आप उसमें घुसते हो, such sharp plain mirrors they are having, आपको फील ही नहीं होता कि आगे प्लेन मिरर लगा हुआ है, या क्या कहते हैं गेट, वहां पे एंट्रेंस है। आपको ऐसा लगता है देयर इज एंट्रेंस, एंड उन्होंने अपना एक वो चौकीदार बिठा रखा है वहां पे, वो पकड़ के आपको इधर करता है, अरे भाई यू विल स्ट्राइक विद द मिरर। एंड आप जब उसके अंदर देखते हो बच्चों, दे आर हैविंग ए पिक्चर placed, not a picture, but you can say memento, or you can say statue of Arjuna and this Krishna. कभी अगर आप कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर में गए हो तो वो कहते हैं कि ज्योतिसर इज द प्लेस इन कुरुक्षेत्र, थानेसर से थोड़ा पहले है, when you go from Pehava to कुरुक्षेत्र। and वहां पे क्या बच्चों, ज्योतिसर इज ए प्लेस वेयर Krishna, Lord Krishna has given the Upadesha to Arjuna when he has decided not to fight against the Kauravas. जब उस कृष्ण जी ने अपना उसको उपदेश दिया था, अर्जुन ने अपने हथियार फेंक दिए थे कि मैं अपने भाइयों से नहीं लड़ सकता। वो जो चैरियट, वो जो रथ है, वो जो वहां बना हुआ है ज्योतिसर में, सेम डिट्टो आइडेंटिकल, वो जो है, वो जो कृष्ण जी ने अपना हथियार फेंक दिए थे कि मैं अपने भाइयों से नहीं लड़ सकता। वो जो चैरियट, वो जो रथ है, वो जो वहां बना हुआ है ज्योतिसर में, सेम डिट्टो आइडेंटिकल, वो जो कृष्ण जी ने अपना हथियार फेंक दिए थे कि मैं अपने भाइयों से नहीं लड़ सकता। वो जो
statue of Arjuna, Lord Krishna and the chariot of रथ का वो वहां है, पावन धाम में है. जब बच्चों आप उसको देखते हो, straight you get thousands of images of that Arjuna and Lord Krishna. Like this, there are having so many other statues also, and you see, it's a very beautiful मंदिर. मंदिर है, धाम है, जो भी है. कभी भी आपका चक्कर लगे, जरूर देखिएगा, and you will find there this concept, multiple images. Okay. So now, coming to this again, multiple images. Multiple image, formation of multiple images, and there is set formula that 360 divided by the angle in between the plane mirrors, less 1 is the number of images. Now, on the basis of formation of multiple images, kaleidoscope, by using 3 plane mirrors set at angle of 60 degree. Set at an angle of 60 degree. क्या है बच्चों? Now, what I am having? I am having strips of 3 plane mirrors. If we are arranging these 3 strips of plane mirror in such a way that they make an angle of 60 degree, like this, it becomes a hollow prism. अंदर से खोखला है प्रिज्म. प्रिज्म कैसा होता है? ऐसा होता है. आई एम शोइंग यू. See, this is a prism. Like this. Hollow. ये तो अंदर से ट्रांसपेरेंट मीडियम का है, बट here and hollow prism and the shining yani polished sides are inside. Suppose now if we are placing an object in this hollow space, what will happen? The image formed in this plane mirror will become an object for this and this, and the image formed in this mirror will become an object for this and this. यानी कि तीनों प्लेन मिरर्स के अंदर जो इमेज बन रही है, इट विल वर्क एंड एज ऑब्जेक्ट फॉर द अदर 2 मिरर्स. एंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी हाउ मेनी? 360 divided by 60, that comes out to be 6, less 1. Number of images formed will be 5. Now here it is not x, it is 60. What will be the answer? Answer will be 5. So beautiful. It is an instrument. Kaleidoscope क्या है बच्चों? Kaleidoscope is an instrument which is working on the principle of formation of multiple images when 2 or more mirrors are kept inclined at a particular angle. So and this kaleidoscope is being used by designers, patterners. ये बच्चों क्या है? अब तो क्या आपके टॉयज, चाइनीज टॉयज, वो रिमोट से चलने वाले टॉयज आ गए हैं. When I was a kid like you, we were using this as our very best toy. Reason being, in this kaleidoscope, when we will try to understand how we can make our own kaleidoscope and how it works and all that, ये kaleidoscope हमने लास्ट सेशन में बनाया था. How it is prepared or made and all that, I will explain you. Kaleidoscope, okay? कैसे बनता है बच्चों kaleidoscope? What are the requirements? 3 strips of plane mirror. They should be of equal size. Equal size. Length and breadth, plane mirrors. Okay. Now, what you have to do is, you
have to place these mirrors. You can use sellotape. When you place these mirrors at 60-degree angle and make a triangle, you can say you have studied in the mathematics isosceles triangle when all the three sides are equal. इसमें भी क्या है? Side of the strip is same. If you want to make an angle, a triangle, it will be an isosceles triangle. All sides are equal. Okay. And when isosceles triangle, three sides, it is having an angle of 60 degree. Okay. How to make your own kaleidoscope? आपने इन तीनों को अरेंज कर लिया, keeping the polished side inside, making a hollow prism. Okay, like this. इसको आप ऐसे रखेंगे. चलिए, hollow prism बन गया बच्चों. Inclined at angle of 60. You can use the tape, or you can even आजकल क्या बच्चों glue gun आती है. By glue gun you can fix all the three sides. Now you have to take a round tube. कार्डबोर्ड की बच्चों राउंड ट्यूब मिल जाती है. The size of the round tube should be bit more than the size of this. If it is 15 centimeter, take it 18, 17, 18 centimeters. वो जो ट्यूब है, इसमें जब पिछली बार वो बच्चे ने बनाया, बच्चों उसने ट्यूब नहीं बनाई. He has just used the three strips of the three plane mirrors. He has not used the hollow tube. Okay. On the one side of this hollow prism structure made, वो three strips जो हमने यूज किए हैं, you have to use a cardboard, opaque, no light can come from this side, opaque. वो जो opaque material आप यूज करेंगे, you have to make a small slit, छोटा सा एक उसमें आप होल रखेंगे, so you can peep, आप देख सकते हैं इसके अंदर से. That's all. And on the other side, which is, मैंने क्या कहा आपको, the size of the tube should be bit more than the size of the mirror strips. Of course, if this is the size of the strip and this is the size of the round tube, here you are fixing here you are placing a opaque cardboard strip, disc you can say, disc, you use the word disc. Okay. Have a slit, उसमें एक छोटा सा होल करेंगे आप. Now, the size of this tube is more than the size of the strips or the mirrors you can say. Cut at 60 degree angle. Here, at one end you place a translucent disc. Translucent glass, ground glass मिलता है बच्चों. ग्राउंड ग्लास के दो राउंड डिस्क ले लीजिए, एक ग्राउंड ग्लास की, एक प्लेन ग्लास की. At the end of the strips, fix the plain glass disc, and at the end of the tube, जहां मिरर की स्ट्रिप्स एंड हो रही हैं, there you place a plain glass disc, and at the end of the tube, which is slightly bigger than the size of the strips of the plane mirror, you have to place what? The ground glass disc. Disc आपने दो राउंड, इन्हें आप क्या कहते हैं? You should have three discs. One is opaque material, one is plain glass, and the third is ground glass or translucent material you can say. Now before fixing this translucent disc or the ground glass disc, what you have to do? You have to place certain multicolored pieces of plastic or multicolored pieces of broken bangles. चूड़ियां टूट जाती है ना, करवा चौथ में मम्मा यूज करती हैं, बाद में धीरे धीरे एक एक करके टूट भी जाती हैं, डिफरेंट कलर्स की आती हैं. ठीक है ना. शायद आपने पिक्चर देखी हो करण अर्जुन, उसमें भी वो चूड़ियों का जिक्र है कहीं, वो शाहरुख खान और वो
तो दूसरा हीरो कौन था? सलमान खान। वो अपनी मम्मा के लिए लेने जाते हैं, चूड़ियां खरीदते हैं मेले में। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? हो सकता है कई बार आप वीडियो देखते देखते आपका ध्यान दूसरी तरफ होता है, यू कैन बी अट्रैक्टेड बाय द नेम ऑफ सलमान एंड शाहरुख, है ना? ओके, थैंक यू। यस, नाउ व्हाट यू हैव डन? You have placed pieces of colors of different shape and sizes, plastic pieces, different colors, different shape, different sizes. Or you can place different colors, bangles and all that. Now place the translucent disc here. Try to see from the other side on which you have fixed the opaque disc having a slit, having a small hole, keeping this side towards the, क्या कहते हैं, जिधर से rays of light are coming, light is coming. आपका रूम है, you can tilt this towards the LED or the bulb or the tube light, or if you are in an open, you can see from where you are in a room or door side. That means from where the light is coming. What you will find? You will find beautiful patterns made by these multicolored plastic pieces or multicolored broken bangles pieces inside it. And the beauty of this kaleidoscope is, no, you can never see the same pattern again. एक बार से आप हल्का सा हिलाते हो, उनकी जो स्पेसिस हैं, देयर इज स्पेस, वी हैव प्लेस्ड फ्यू पीसेस ऑफ प्लास्टिक मल्टी-कलर डिफरेंट साइजेस और बैंगल्स. देयर इज स्पेस बिटवीन द प्लेन ग्लास डिस्क एंड द ट्रांसलूसेंट ग्लास डिस्क. They change their space, that means place of the object is changed. Always, every time when you shake or when you disturb this three arrangement of these three mirror strips, the place of the object is changed. When the place of the object is changed, they are going to form images at different spaces. पढ़ा ना हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, at equidistance, behind the mirror, वर्चुअल इमेज, सेम साइज. कहने का मतलब क्या है बच्चों? एक पैटर्न जो इस कैलेडोस्कोप में आप देखते हैं, यू कैन नेवर सी अगेन. तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पैटर्न्स. एंड दिस कैलेडोस्कोप, आजकल तो बच्चों कंप्यूटराइज्ड हो गया सारा काम. दिस कैलेडोस्कोप वाज बीइंग यूज्ड बाय द डिजाइनर्स इन, यू कैन से, कैसे वो textile mills and all that, to make different designs and all that. और हमारे लिए जब हम बचपन में थे, हमारे लिए क्या था? दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉय. बड़ा मजा आता था, हल्का सा उसे हम डिस्टर्ब करते थे, आहा पता नहीं क्या बन गया. Every time you will see a different picture inside this instrument. So this is how a kaleidoscope works. It works on the principle of reflected light can be reflected again, and if two plane mirrors are kept at an inclined angle, they form multiple images. Okay, last for this today, just we are going to try. Tomorrow we will discuss the eye. Okay, last we are going to, yes, dispersion of light. Yes, with the sunlight. Sunlight is treated to be the what? This sunlight is treated as a white light. Whether this white light is made up of white color, no. Whether this is simple white color, it is made up of 7 colors. और वो भी क्या है बच्चों? Vibgyor. 7 colors are there: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेड, वो हम शायद हमने 7th में करा था. या कभी मौका मिला, we will again go through that. Vibgyor.
sunlight is not a white light, it is made up of 7 colors and it is visible as the white light. Can we, by doing some activity, can we see that 7 colors? Yes. If we are using a prism and allowing it sunlight to pass through this transparent medium, that is glass, the white light will split into all the 7 colors. How we can do this activity? You have to use a dark room. Dark room, place a prism, and in other side of the prism on the wall, you can have a screen, white screen. Allow the beam of light. You can use a torch, laser beam you can use, laser light, LED light you can use, white light. It should be white light. Not that laser light में आप वो red or blue and all that. No, it should be white light. White light is made up of 7 colors. Allow the light to fall on the prism. When it will pass through this transparent medium, it will split into the 7 colors and you will have a spectrum on the screen kept on the other side, other wall. चलो इसको हम रिमूव करते हैं. Now we can have here. This is your prism. This light is coming. It will split into 7 colors and make a spectrum here of this violet, indigo, blue, green, yellow and orange, red. Okay? All 7 different colors spectrum you will see. And this splitting up of white light into its constituent or into 7 colors is known as, when it is passed through a transparent medium, is known as dispersion of light. The splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium, that is prism, is called dispersion of light. Is called dispersion of light. Okay? And bachcho, in your daily life, formation of the rainbow after the drizzle or the rain. I mean, drizzling is there, and when all of a sudden bright sunshine is there, you see a rainbow in the sky. And formation of rainbow is what? Is the beautiful example of dispersion of light. Here, how the rainbow is formed. The small, tiny water droplets which are floating in the air, they work as thousands and thousands and thousands of prisms. And when the light passes through these tiny water droplets, this is also a transparent medium. Water is transparent. They split it into, the light splits into 7 colors and makes the rainbow. और सबसे बड़ी बात क्या, थोड़ा बच्चों आप नोट करना, ये जो रेनबो बनता है, if the sun is on this side, rainbow is formed on this side, and if the sun is on this side, rainbow will be formed on the opposite side. तभी तो मैंने कहा था प्रिज्म के दूसरी साइड, वॉल पे, स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम बनता है. This activity we had been doing in person. We were going to the lawn where we are having our, you can say, submersible pump, पानी वाला जहां पंप लगा हुआ है, पाइप लगा के, you are just having a, just फुहार सी हम फेंकते थे other side of the sun, and you can see the formation of rainbow. What we are doing. और मैं आपको कहता हूं ना, जब आप स्कूल आओगे, उम्मीद है बच्चों जनवरी से आप आना शुरू करोगे, तो जो मैं एक्टिविटी आपको बोलता हूं कि हम करेंगे, प्लीज गो ऑन नोटिंग, एंड व्हेन यू रीजॉइन मी इन द स्कूल, जस्ट टेल मी, वी विल डू ऑल द एक्टिविटीज. And with this I end today's topic.
Tomorrow we will study the eye. The next one left, what left will be the defects of eye, and that एक वो जो मैंने आपको बताया था एक्टिविटी करेंगे. क्या था ना, कौन से वाली? पैरेट एंड केस. ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ब्रिल लैंग्वेज, दिस एंड दैट. 2 more topics, lessons we require, and we will finish this topic. Okay, enjoy your study. Any problem, always free to contact me at my number. Thank you.